Hello students, in this part we will discuss on pistil, ovule and megasporogenesis. In previous part, one word was remaining, microsporogenesis. What is microsporogenesis? In the pollen sac, a diploid microspore mother cell give birth or divide or breaks down into haploid microspores. In microspore, what is microsporogenesis? In pollen sac, microspore mother cell, diploid microspore mother cell divide into haploid microspore. That is called microsporogenesis, because male germ cell are smaller than the female. In this, megasporogenesis means large scale. Then what is pistil? Pistil is also known as carpel, and it is gynoecium. It is the female part of a flower. फ्लावर का जो फीमेल पोर्शन होता है, फीमेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड कार्पेल, पिस्टिल और gynoecium. इन फ्लावर देयर आर वन कार्पेल. कुछ ऐसे फ्लावर हैं जिसमें केवल एक ही कार्पेल होता है. उस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं? मोनोकार्पेलरी फ्लावर. वन कार्पेल, मोनोकार्पेल और मोनोकार्पेलरी फ्लावर. And some flower contain two or more carpels, and some flowers contains two or more carpels. Those are called multicarpellary flower, which contain only single carpel. Those are called monocarpellary flower, and which contain two or more carpels. Those are called multicarpellary flower. अब multicarpellary flower इसका मतलब इसमें कार्पेल दो या दो से ज़्यादा हैं. अब कार्पेल जो दो या दो से ज़्यादा हैं वो फ्यूज भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं. मल्टीकार्पेलरी जो फ्लावर होते हैं, multicarpellary flower, that is two type. As we know, multicarpel means they contain two or more carpels. Those two or more carpels may be fused or free. If they are fused, then that is called syncarpus, and if they are free, that is called apocarpus. So multicarpel flower is two type, apocarpus and syncarpus. Apocarpus, in which two or more carpels are free. The carpels are free from each other. That arrangement is called apocarpus. For example, Michelia. Michelia flowers carpels contain free from each other. So this type of arrangement is called apocarpus multicarpellary flower. And if the carpel are fused with each other, this type of carpel is called syncarpus. If the carpels are fused with each other, that is called syncarpus. For example, papaver. Papaver is a poppy plant from which we can obtain a film. Papaver, in which the carpels, multicarpel, are fused with each other, that is called syncarpus. A carpel or pistil or gynoecium consists three parts. A carpel consists three parts. Three part means stigma, style, and third one is ovary.
A carpel consists 3 parts. Which one? Suppose this is the carpel. A carpel pistil is a female part of a flower. It contains 3 parts. This one is the stigma, this one is style, and basal swollen portion is known as ovary. Stigma. क्या काम होता है stigma? It is the platform. It is the platform at which pollen grain fall off. Define stigma. It is the platform at which pollen grain fall off. First. Secondly क्या कहता है स्टिग्मा? It recognize the species of pollen grains. पहली बात तो वो कार्पेल का वो हिस्सा, वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर पोलन ग्रेन आके फॉल ऑफ होते हैं. दूसरा, अब स्टिग्मा क्या काम करता है? स्टिग्मा रिकॉग्नाइज द स्पीसीज ऑफ पोलन ग्रेन. स्टिग्मा उन पोलन ग्रेन की स्पीसीज को रिकॉग्नाइज करता है. मीन्स सपोज कीजिए रोज की स्टिग्मा के ऊपर जैस्मिन के पोलन ग्रेन आ गए तो स्टिग्मा क्या करेगा? उसको रिकॉग्नाइज करेगा. रॉन्ग स्पीसीज है या राइट स्पीसीज है? राइट स्पीसीज मीन्स सेम स्पीसीज. यदि राइट स्पीसीज के हैं तो कंपैटिबिलिटी होती है, प्रोसेस कंपैटिबिलिटी, तो उसको स्टिग्मा क्या करेगा? उस प्रकार के राइट स्पीसीज वाले को, कंपैटिबिलिटी वाले को क्या करेगा? स्टिग्मा उन पोलन ग्रेन को जर्मिनेशन के लिए साइट प्रोवाइड करा देगा. इफ the pollen grains of wrong species means different species के हैं, then the stigma that is called incompatibility. Same species compatibility, different species incompatibility. और different species उनका stigma उन pollen grain को fall off करवाता. The first one is provide the platform for the pollen grain. Second one is recognize. Next one is style. A tube which connects stigma to ovary. This is the ovary. स्टिग्मा से ओवरी को कनेक्ट करने वाले ट्यूब को क्या बोलते हैं? स्टाइल. अब जैसे इसमें पोलन ग्रेन होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, पोलन ग्रेन गिरते हैं, तो पहली बात तो स्टिग्मा को रिकॉग्नाइज करता है. रिकॉग्नाइज करने के बाद पोलन ग्रेन यदि सेम स्पीसीज के तो अपने ट्यूब बनाते हैं. जो ट्यूब पोलन ग्रेन के द्वारा बनाई जाती है उस ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब. दिस इज द पोलन ट्यूब. इसका मतलब स्टाइल के अंदर एक ट्यूब और है, पोलन ट्यूब. ये ट्यूब पोलन ग्रेन के द्वारा बनाई गई है जिसमें से जर्म सेल एंट्री करते हैं. कहाँ से? स्टिग्मा से लेकर के ओवरी में ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एंट्री करते हैं. पोलन ट्यूब. स्टाइल कंटेन्स ए पोलन ट्यूब विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन्स. ओवरी द बेसल सबोलन पार्ट. कार्पेल का नीचे का जो हिस्सा स्वॉलन मतलब फूला हुआ हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड ओवेरी. आफ्टर मैच्योरिटी, फर्टिलाइजिंग के बाद ओवेरी मैच्योर हो जाती है तो कन्वर्ट इनटू फ्रूट. और ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है जो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर. इट इज द बेसल स्वॉलन पार्ट ऑफ द कार्पेल, दैट इज कॉल्ड ओवेरी. ओवेरी कंसिस्ट ओव्यूल. ओवेरी कंसिस्ट ओव्यूल. द नेक्स्ट वन इज an ovary contains a cavity. ओवेरी के अंदर एक कैविटी होती है. दिस कैविटी इज नोन एज ओवेरियन कैविटी. ओवेरियन कैविटी. इस ओवेरियन कैविटी में चैम्बर होते हैं. देयर आर चैम्बर्स इन ओवेरियन कैविटी, मे बी 1 or 2, more than 2. In ovarian cavity there are chambers, 1 or more. Those chambers are called locules. What do you understand by locules? In ovarian cavity there are 1 or more chambers. Those chambers are called locules. Locules attach करता है किससे? प्लेसेंटा के द्वारा. यानी लोक्यूल प्लेसेंटा के द्वारा अटैच किससे होता है? ओवेरी से. Placenta attach the locules with ovary. Placenta attach the locules with ovary, or you can say that ovary के सॉरी, not ovary, ovule. Placenta attach the locules with ovule. ये ओव्यूल मैच्योर होने के पश्चात आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट चेंज इनटू सीड. ओव्यूल चेंज इनटू सीड एंड ओवेरी चेंज इनटू फ्रूट. Clear? This is the part of pistil as we have discussed. Pistil, carpel, gynosin. The next part is ovule. Ovule, it is present inside the ovary.
ओव्यूल जो होता है ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ओव्यूल जो प्लेसेंटा के द्वारा लोक्यूल या ओवेरी से अटैच होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल? Structure of ovule. Ovule after fertilization and gaining maturity change into seed. What is the structure of ovule? This is the structure of ovule. There are different parts of a ovule. One is funicle, hilum. A small pore is present through the pollen tubes. Pollen grain enters into the ovule. This small pore is known as micropyle. Micropyle. And the side towards the micropyle is known as micropylar. This is the micropylar side. Just opposite to the micropyle, one vessel and कह सकते हैं that is called chalaza. So remember, it is also known as chalaza. And the membrane which cover the ovule known as integument. Integument. This is the nucleus, and this contain embryo sac. Embryo sac in which embryo development can take place. So draw the structure of ovule as well as mention its all labeled part. First one is funicle. Funicle एम्ब्रियो का वो पार्ट होता है जो मतलब प्लेसेंटा की बात ही है, जो ओवेरी को ओव्यूल से कनेक्ट करने का काम करता है. इट इज द या इट कनेक्ट्स ओव्यूल टू ovary, that is called funicle. This neck-like structure, and the junction where the funicle and ovule are attached, ये funicle junction जो ovule को funicle से जोड़ने का, that is called hilum. What is hilum? It is the junction between the funicle and ovule. Funicle and ovule के बीच का जो junction, that is called hilum. Next one is micropyle. A fine or a tiny pore, teeny pore. A teeny pore. This is the teeny pore. यहाँ से pollen tube आती हैं और pollen tube में से germ cell entry करते हैं. This is the teeny pore present at ovule. Present at ovule through the male germ cell enters into the ovule by pollen tube. This is called micropyle. और जिधर micropyle है वो साइड को क्या कहेंगे? Micropylar side. Just opposite to the micropyle, the another side is known as chalaza. Chalaza. It is the opposite end of micropyle. It is the opposite and basal end. Opposite or basal end of micropyle is known as chalaza. Next one is integument. Integuments. Ovules is protected by one or two layers. Those protective layers are known as integuments. The protective layer of the ovule known as integument. Integument. On the basis of integument, there are three types of ovule: unitegmic, bitegmic, and entegmic. There are three types of ovule:
Unitagmic, it means this ovule is protected by single layer, single integument. It is protected by single layer or single integument. For example, gymnosperm and gamopetalous. Gamopetalous, it means petals of flowers are fused with each other. The flower in which petals present and those petals are fused with each other. Those type of flower are known as gamopetalous. Bitegmic, this ovule is protected by two layers. Two integuments, two layers, that is called bitegmic. For example, polypetalous. Polypetalous flowers कौन से होते हैं? The flowers in which petals, there are many petals and they are all petals are free. Polypetalous and angiosperm. Flower contains bitegmic. And there are some flowers in which ovule contain doesn't any integument, no tegument, no integument. Those ovule are called antegmic. Ategmic भी कह सकते हैं. Ategmic, antegmic or ategmic. For example, Loranthus flower contains no Loranthus ovule contain no any protective layer. So on the basis of integument there are three types of ovules. The next one is nucellus. Integument से लेकर के अंदर का जो हिस्सा है, the all parts around the inside the integument is known as nucellus. Just inside the integument, the area is known as nucellus. This nucellus may be well developed or not well developed. It means two types. Nucellus is two types: crassinucleate and tenunucleate. Crassinucleate or tenunucleate. Crassinucleate, it means nucellus is well developed. Well developed nucellus contain flowers are known as crassinucleate. For example, polypetalous. Petals are free from each other. Tenunucleate, not well developed. Not well developed. Nucellus, those are called tenunucleate. For example, gamopetalous. Gamopetalous stand for the petals which are fused with each other. Next one is embryo sac. This is the site in which embryo develop can take place, that is called embryo sac. Clear? In next part we will discuss on megasporogenesis.